A company in the wastewater infrastructure space has received rupees 400 crore contract, nearly 38% of its annual revenue, marking a shift towards more advanced, higher margin projects. It now eyes 35 to 40% top line growth and expanding O&M income for steadier cash flows. Meanwhile, a pipe manufacturer is entering premium segments like oil and gas and city gas with a new 3 lakh million tons per annum line, aiming to lift its value-added product share to 50% and boost export volumes. Both are navigating sector shifts with targeting expansion and margin-focused strategies. Hi, and welcome to another exciting edition of Noisemaker, जहां हम चीजें सिंपल रखते हैं, फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती, but have strong potential to deliver in the long run. I am Nishant, Research Analyst at Desvelado Advisory, और आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जो अपने बिजनेस में सॉलिड प्रोग्रेस कर रही है, and if current trends remain intact, they might continue to grow even further. But before jumping to the companies, let's see the disclaimer first. Any discussion, facts or writing provided are for informational purposes only and do not constitute a buy or sell recommendation. Please conduct your own due diligence before making any investment decision. So, let's start with the first company, Enviro Infra Engineers Ltd. ये कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिजाइन करती है, बनाती है और उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है. मोस्टली ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है जिसमें क्लीन वाटर सप्लाई और डर्टी वाटर को ट्रीट करना शामिल होता है. Basically, the company has received a rupees 400 crore order from Maharashtra Industrial Development Corporation to upgrade Common Effluent Treatment Plants (CETPs) with Zero Liquid Discharge systems, a step that brings the company into advanced vast wastewater treatment. एग्जीक्यूशन टाइम जो है ऑर्डर का वो बेसिकली 24 मंथ का है और ये ऑर्डर कंपनी के FY25 रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 38% है, गिविंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 2 अपकमिंग ईयर्स. इस डील के थ्रू कंपनी अपने टेक्नोलॉजी लेड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने जा रही है जो कि उसके टारगेटेड रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ स्ट्रेटजी का की पार्ट है. साथ ही O&M बिजनेस भी 70 to 75 करोड़ एनुअली तक ग्रो करने का एस्टिमेट मैनेजमेंट ने दिया है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर, जिससे कैश फ्लो स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगी. केपेक्स की बात करें तो दे प्लान 50 to 75 करोड़ केपेक्स एंड डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.24x है एक्सपेरेज. इससे ये क्लियरली लगता है कि ग्रोथ को लार्जली इंटरनल एक्रूवल से फंड किया जा सकता है. अगर एग्जीक्यूशन स्मूथ रहा तो कंपनी लार्जर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेंडर्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है इन न्यू ज्योग्राफीज गोइंग फॉरवर्ड. Now, coming to the number, the company saw strong financial performance in FY25 with revenue from operations rising 46.2% year over year to rupees 1066 crore. This was mainly driven by a sharp 56.2% sequential jump in Q4 FY25 revenues to rupees 392.9 crore, reflecting better execution and new order inflows. On the other hand, EBITDA also improved significantly, growing from rupees 166.5 crore in FY24 to rupees 267.8 crore in FY25, with the EBITDA margin stable at 25.1%. Net profit rose by over 66% year over year to rupees 177.1 crore in FY25 compared to rupees 106.4 crore in FY24, maintaining a consistent net profit margin of 16.3%. Going forward, the company expects its cash cycle to improve, driven by rising O&M revenue and lump sum government projects, but dependency कम होने से. टारगेट ये है कि रिसीवेबल डेज को FY25 के 74 डेज से रिड्यूस करके 45 to 50 डेज के आसपास लाया जाए, जो कि वर्किंग कैपिटल फ्री करेगा और डेली इक्विटी को भी स्ट्रेंथन करेगा. साथ ही कंपनी अब अर्ली स्टेज पर इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रही है, जैसे मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, जिसका गोल है अपनी डिपेंडेंसी डोमेस्टिक गवर्नमेंट वर्क से ग्रेजुअली कम करना. इसका ब्रॉडर एम है नए इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एंटर करना और एक डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक क्रिएट करना जिसमें फुल EPC कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो आउटसाइड इंडिया. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कंपनी, JTL Industries Ltd. ये एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है जो स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और उनसे जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट बनाती है और सप्लाई करती है. इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मेनली इंडिया में लोकेटेड है, जहां पर ये रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद प्रोड्यूस करते हैं. सो द कंपनी इज सेटिंग अप अ न्यू 3 lakh MTPA ERW pipe manufacturing line focused on ASTM
API ग्रेड सेगमेंट जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में ऑपरेशन होने की एक्सपेक्टेशन है। ये फैसिलिटी हायर थिकनेस और लार्ज डायमीटर पाइप्स बनाएगी अप टू 20 इंचेस डायमीटर और 16 mm थिकनेस, टारगेटिंग की सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस, वाटर सप्लाई और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। इन सेगमेंट्स में मार्जिनली यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, टिपिकली EBITDA इन द 7,000 to 8,000 पर टन रेंज। इस एक्सपेंशन के थ्रू कंपनी का गोल है अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स को 34% से इंक्रीज करके 50% तक ले जाना और ओवरऑल EBITDA पर टन इंप्रूव करना टू 4200 to 4400 बाय FY26। ये मूव कंपनी की ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट है जहां वो प्रीमियम एप्लीकेशंस में एक्सपेंड कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन डिमांड एरियाज में अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग बना रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल, द कंपनी रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन एनुअल रेवेन्यू फॉर FY25 falling 6.1% to rupees 1916.3 crore from 2040.7 crore in FY24 amid volatility in quarterly performance. Revenue in Q4 FY25 came in at rupees 469.4 crore, slightly up from the previous quarter. Despite this, EBITDA dropped from 152.7 crore in FY24 to rupees 122.9 crore in FY25, pulling down the EBITDA margin from 7.5% to 6.4%. Net profit also declined to rupees 98.9 crore in FY25, down from rupees 113 crore the year before, with the net profit margin narrowing to 5.1%. Going forward, now company is planning to scale up exports to around 50,000 to 60,000 tons in FY26, mainly targeting markets like the US, Canada and Mexico. ये exports overall 5 lakh metric tons का सेल्स टारगेट का अप्रोक्सीमेटली 10% हिस्सा बनाएंगे और ये मूव कंपनी के ब्रॉडर ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के अंदर आता है जिसका गोल है डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंडेंसी कम करना। साथ ही कंपनी अपना प्रोडक्ट रेंज भी एक्सपेंड कर रही है बाय एडिंग 1000 न्यू SKUs, जिससे टोटल पोर्टफोलियो 2500 SKUs तक पहुंच जाएगा। ये ब्रॉडर पोर्टफोलियो कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को कैटर करेगा और कस्टमर के साथ एंगेजमेंट और रिटेंशन इंप्रूव करेगा, स्पेशली इन highly competitive space. Now let's review some of our previous week that we have. Gabriel India Limited up 27.8%, Interarch Building Solutions Limited that we covered up 11.4%, MTAR Technologies Limited which we covered is down by 9.2%, Hindustan Foods Limited which we covered is up by 4.1%, and Axis Gate Technologies Limited which we covered is up 1.5%. So you can scan the QR that you are seeing on your screen so as to get all the previous picks that we have covered in our Noisemaker section for your decision making purpose. Now let's see the summary of today's recent filing, which includes Enviro Infra Engineers Ltd. Basically, the company has secured a rupees 400 crore order from Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) to upgrade Common Effluent Treatment Plants (CETPs) with Zero Liquid Discharge technology. Next, JTL Industries Ltd. The company has announced a major expansion with the commissioning of a new 3 lakh megaton per annum electric resistance welded ERW pipe manufacturing line dedicated to ASTM/API grade segment, expected to be operational within the next 12 months. So that's it for today's edition of the Noisemaker. अगर आपको breakdown informative लगा हो so you can scan the QR to read the full report. We will be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed and stay ahead.